Good morning, dear children. Welcome to Sanvi Learning Services. Okay, I'm your physics teacher. Yes. Yes. We are discussing our second chapter, friction. In the last class, we discussed some different types of frictional forces, right? So those are effect of area of contact on frictional force, and also we discussed effect of roughness on frictional force, and we observe the variations of friction. So there we conclude that frictional force affects on roughness and smoothness. That means it depends upon the surface, but it does not depends upon the area of the contact. Yes, frictional force does not affect the area of the contact. So now in this class we discussed more about frictional forces. Yes, first one is the effect of normal force on friction. So we discussed in the last class effect of area of contact on frictional force. So there we concluded that the frictional force independent of the area of contact, right? Now look at here. We have to take here a brick or horizontal floor, and we have to pull it with the spring balance. Yes, and here this spring balance is pulled by our hand. So here we have to keep a brick on the horizontal floor, and we have to pull it with the spring balance attached to it, and we have to measure the frictional force on this spring balance. Here, when we pull it backwards, it will show some readings on the spring balance. Here we have to put another brick over the brick tied to the spring balance, or we have to press it vertically with our hand. Here we have to measure the force of friction. Here we have to keep another brick, or otherwise we have to keep the brick vertically and we have to press this brick with our hand. So when we pull it back, it will show some readings on this spring balance. Yes, so here, is there any difference between frictional force in two cases? When we pull it normally, yes, when it is only one brick, when we pull it, it will show some readings. We know that. When we are kept another brick on this brick, okay, upon this brick, when we kept another brick, when we pull it back, it will show another readings.
Yes. Here we will observe that when we add a brick to the existing brick, or when we apply a force by pressing it vertically, here the normal force increases. Okay, so when we add a brick to the existing brick, here the normal force increases, and hence there is an increase in the frictional force. When the normal force increases, there the frictional force also increases. Here we can say that this frictional force is directly proportional to the normal force. That means if the normal force increases, frictional force also increases. If the normal force decreases, frictional force also decreases. Okay, so that's why I'm saying here the normal force here directly proportional to the frictional force. So we can write frictional force is directly proportional to the normal force. So the proportionality symbol is like this. You can see here the proportionality symbol. Now here, some questions for you. Does friction act on a table resting on the floor? If normal force is double, what happens to friction? Here one more question. Your friend says friction depends on the area of contact. How do you correct your friend to some experiments? And finally, friction is independent of weight, but depends on normal force between surfaces of contact where friction exists. Do you agree with this statement? So here, the answers for all these questions, I'll explain you one by one now. Here, does friction acts on a table resting on the floor? Yes. Here, the frictional force acts on the table. Okay, so here frictional force is acting on the table. We can say that that is a static friction. So this one we can say that static friction. Now, next one. If normal force is double, what happens to friction? We know that just now we discussed, if the normal force increases, frictional force also increases. And I said that frictional force directly proportional to normal force. So from this we can see that when normal force is double, the friction will be increased high. Okay, when the normal force increases, that means double, the friction will increase high. Now next one. Here, friction depends on friction depends on the area of contact. Yes,
In the last class, we performed the activity, right? Here, if is plain that the friction does not depend on the area of contact. So here, a brick kept horizontal to the surface to a spring balance and pulling it at the hook. Yes, there we have taken one brick and it is attached to the spring balance, and by using a hook we pulling it backwards, right? So here, when the brick keeping the vertical direction or to the surface, in two cases, when the brick is in horizontal direction and when brick is in vertical direction, here we find no difference in the friction. Yes, in both cases, there is no change in the frictional force. So from this we can say that the friction depends on the normal force and not on weight of the object on the surface of contact. Friction does not depend on the weight of the object on the surface of contact. It depends on the normal force. Okay, and finally, friction is independent of weight but depends on normal force between surface of contact where exists. Do you agree with this statement? Yes. Here, just now we discussed the activity. The frictional force does not depend on the area of the contact on the surface of the object. In both cases, that means when we kept the brick in horizontal direction and in vertical direction, here the weight of the brick does not change. Just we have changed the direction here, but the weight is remains as same. Here we change the position. Here, when its position was changed, the friction as it in this each case is not changed. Here, frictional force is does not depends on this area of the contact. Here, the weight of the brick is remains as same in both cases. So that's why here frictional force is same. It depends upon the only normal force. It is directly proportional to the normal force. And next one. Is friction necessary? Yes. Without friction, we can't imagine our world. Here, I'll give you some examples how the friction is necessary. Okay, here. Now, try to walk on muddy or slippery surface. So when we walk on muddy or slippery surface, we find difficulty to walk. Why is it so? Yes, we cannot walk or run without friction. So there on muddy or slippery surface, the frictional force is very, very less. So that's why we find difficult to walk on slippery surface, on muddy surface. We cannot walk without friction. Now let's see the things that will not happen in the world if friction was not present. We will not have any cars, bicycles or scooters. All of them move only because of friction. Yes? Now, even
If somebody pushes a car, we will not be able to stop it by applying brakes. And carpenters will not be able to smoothen surfaces. You will not be able to hold any appliances such as a hammer, soap, etc. Even without friction, we cannot talk. We cannot write on the book. We cannot hold anything. We cannot sit also. Yes? Now, it will not be possible to write with a pen or pencil if there is no friction. You will not be able to fix a nail on the wall. No building could be constructed if there was no friction. Okay? So here, all the above examples tells the importance of friction. So here, I said so many examples here about friction. So without friction, all these examples were not possible. Yes, here, without friction, we cannot do any work. Yes, here, we can also say that friction is undesirable too in the machinery. For instance, friction is responsible for overheating and wearing out of moving parts. Yes, you need to apply oil or grease to your bicycle parts in order to make it move smoothly. So here, when we apply grease or oil to our bicycle parts, then the bicycle or any vehicle, it will move very smoothly. There, why the bicycle or vehicle will move very smoothly after applying grease or oil? There, the frictional force is reduced. Okay, there the frictional force is reduced on the moving parts of the vehicle. Here, I'll explain you that in next activities. Now next. Here, they're asking that make a list of few more examples, the situations where we need to reduce friction for efficient functioning of tools. Now look at here. How the friction produces heat. Here, you can observe in this picture, I'm showing that rubbing hands, and here the person striking a matchstick against the surface of matchbox. Now here, rub your palms against each other for a few minutes. How do you feel? Yes. Now, strike a matchstick against the rough surface of matchbox. What happens here? Here, when we rub our palms together against each other for a few minutes, we feel hot. It is due to the action of friction. Yes, when palms of our hands are rubbed against each other for a few minutes, we feel hot. It is due to the action of friction. And here
in this example also, the matchstick catches fire as the temperature increases with respect to friction. Here, the temperature increases with respect to friction. Okay. Now, here we concluded that friction can produce heat. Now, you have probably heard that spacecraft running to the earth has to be protected by a heat shield cover it. Yes. So what is the material used as the heat shield? Now, what important role does friction play in the life of human beings and animals? Why is friction important for transport? Here, we are for the here. What is the important role does friction plays in the life of human being and animals? Means we are able to walk because it prevents us from slipping. Yes, without friction, bells could not drive machines and the brakes could not be applied to the cars or other vehicles. Without friction, nails and screws could not be used to hold things together and knots could not be tied. Yes. So here, why is friction important for transport means the friction between the tires of a vehicle and road. Tires of a vehicle and road make the vehicle move safely and prevents it from slipping. Okay. So here, the friction between the tires of vehicle and road make the vehicle move safely and prevents it from slipping. Here, the least friction exerted by the seawater on the ship. Okay, listen carefully. The least friction exerted by the seawater on the ship make it move safely and make it easier to stop. So that's why friction is important for transport. Now, how to reduce friction? Here, we need to take a spoon and hold its head. Assume that this as a spoon. Now we have to take a spoon and we have to hold it head. Now we have to hold the mid portion of the spoon by right hand. Okay, this mid portion of the spoon we have to hold with right hand, and this head part of the spoon we have to hold with left hand. Now we have to pull it towards the other end of the spoon. Now we have to pull it with this right hand. This middle part, this middle portion we are holding with our right hand. We have to pull it backwards towards the end of the spoon.
Here, what do you notice? Is there any change? Here, when we pull it towards the end of the spoon, the frictional force will be decreased here because the surface of the spoon very smooth. Yes, when we hold it with our hand and when we pull it towards the end of the spoon, there the frictional force between surface of the fingers and surface of the spoon will be reduced. So that's why we can pull it very easily. Here the frictional force will be reduced between the surface of the hand and the surface of the spoon. Yes. Now, dip your right hand fingers in water. Now we have to hold it as it is. This broader part with our left hand and this mid portion with our right hand. Now we have to dip this right hand portion part in the water and we have to do the same experiment. Again, we have to pull it towards the other end of the spoon. Yes. So now, in which case it is easy to pull and why? And again, asking here one more question. Repeat the activity with the liquids such as coconut oil, grease, etc. and observe the changes they are asking. So here, when we done this activity with, when we kept this in water or when we use other liquids such as coconut oil or grease, the frictional force continuously decreases, completely reduced. When we apply coconut oil or grease, there the frictional force between surface of the spoon and on the surface of the oil, there one layer will be present between the surface of the oil or grease and the surface of the spoon. There the frictional force completely reduced. We can pull it very easily. Yes, we cannot hold tightly the spoon. We can pull it very easily. So in which case is it is easy to pull means when we apply coconut oil or grease, we can pull it very easily because the frictional force completely reduced. Yes. Now, friction can be advantageous in some cases and disadvantageous in another cases. Yes. Now, here we observed in this above activity, the frictional force is reduced. Yes, when we pull it normally, when we hold it with our hand, the spoon, the frictional force is more here. But when we kept in water, when we kept this part in water or when we apply coconut oil, grease, this time the frictional force is completely reduced. Yes, when we compare two cases, in the first case, the frictional force is more. But when we apply the grease or oil, the frictional force is reduced here. Yes, so we can say that in some cases, frictional force is advantageous and in some cases, the frictional force will be disadvantageous. So now we can try with another example.
Have you ever thought why the sole of your shoes is glued? You can observe in this picture. Yes. Why here the sole of your shoes is glued? Yes. Here when we walk on the road without friction, we cannot walk. So why the sole of our shoes is glued means here the frictional force will be more. Yes, here we'll observe the more frictional force. Yes, here friction between the road and this part of the bottom part of the shoe here provided more frictional force. Yes, here these grooves will be provide more friction to the surface of the road. So that's why we can walk very easily on the road. Or we can also say that it is done to provide the shoe better grip on the floor. Yes, so that you can move very safely. Similarly, the tires of cars, trucks and bulldozers are threaded. Yes, here, why do you need to change the tires when its threading is worn out? Yes, here, when the tires threading is worn out, there the frictional force will be reduced. When we move on the road, so there the frictional force between the tire and the road will be reduced completely. So that's why when it's threading worn out, there we have to change the tires. Yes. And gymnasts apply some coarse substances on their hands to increase friction for better grip. So in some situations, friction is undesirable and we would like to minimize it. In some cases, we are minimize the frictional force. You can observe the example here. So when we play carom, there we want to reduce the frictional force. Yes, observe it carefully. Here, play carom board without powder. Okay, first of all, we have to play carom board without powder and then play with fine powder sprinkle on the board. Yes, here, in which case is the movement of the striker and the coins easy and why? Yes, here, when we play the carom with fine powder sprinkle on the board, the movement of the striker and the coins are very easy. Yes, when we play carom board without powder, there the movement of the striker and the coin is not easy. Because here to the surface of the board and to the surface of the coins or striker, here the frictional force will be present. So when we
play carom board without powder, there the frictional force will be more between the surface of the coin and the surface of the board. Between them, the frictional force will be more. But when we play the carom with fine powder sprinkled on the board, there the frictional force will be less between the surface of the coins and the surface of the board. Yes, so that's why we can play the carom very easily. Yes, now, why do we apply a few drops of oil on the things hangs of a door? So here, we want to reduce friction in order to increase efficiency. Yes, we apply a few drops of oil on the hangs of a door because we want to reduce friction in order to increase efficiency. Yes? Now, here also, why do we apply grease between moving parts of motor vehicle? Means in order to increase the efficiency of the vehicle. Okay? Now, here, in all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. So when oil, grease or any other lubricants are applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed between the moving surface. Here, you can observe in this picture. So where we apply the grease or oil, any other lubricants, there a thin layer is formed between the moving surface. Hence, they do not directly rub against each other because between them this lubricant layer will be formed. So that's why they do not directly rub against each other. We can say that is interlocking or irregularities. So this interlocking or irregularities is avoided to a great extent by the application of lubricants. So hence movement becomes smooth. Okay, here the movement becomes smooth. So the substances which reduce friction are called lubricants. The substances which reduce friction are called lubricants. Okay. Now, next one. Effect of rollers on friction. Now, here, pull a suitcase without rollers and pull a suitcase with rollers. Okay, in which case pulling is easy and why? Yes, here we have to pull a suitcase without rollers and we have to pull a suitcase which has rollers. In which case we'll observe pulling is easy. Here we know pulling a suitcase
has a roller is easy. Yes, pulling a suitcase which has roller is easy. Okay. Now, here, try to push a book lying on the table. Yes, now you can observe on the table, book is there. We have to push this book. Now, we have to observe the changes. Again, we have to place the book on two or three pencils or pens. When we are taken pens, we have to remove the caps. Yes, now here assume that these are pencils or pens. Now push the book again. Here what do you notice? And why? In which case it is easy to pull a book and why? Here it is always easier to roll a body than to slide it over a surface. Okay, it is always easier to roll a body than to slide it over a surface. So, it is convenient to pull a suitcase fitted with rollers. And here also, when we place the book on two or three pencils, it is easy to push the book. Yes, so when body rolls over the surface of another body, here the friction offered is called rolling friction. Yes, when one body rolls over the surface of another body, the friction offered is called rolling friction. Okay, now, okay, I'll stop here. We'll continue in the next class. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सानवी लर्निंग सर्विस। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे से हैं और शायद अभी तक जो पाठ हुआ है आप सबको समझ में आया होगा। पाठ शुरुआत करने से पहले हमें मेरा एक अनुरोध है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट विथ यू ऑल। प्लीज एवरीबडी लिसन केयरफुली फर्स्ट। See, those students don't want to listen the class. You can drop out now. Gambala Vikas, sit properly and listen the class. See, I am very serious. Why? Because the beginning it is going to heavy strength. During the class, while going, maximum students going to drop. Here, it is not going to make any joke. Okay, we are dying about you. We are trying to give our best. But suddenly, what is the reason? We don't know. Suddenly, maximum students going to drop during the class. It is not fair. Okay, I'm requesting to you all. If you will think it is my order, that is also no problem. I'm ordering to you all, listen class carefully. We all teachers trying to something give best about your purpose. Okay, if you will get good knowledge, then more than that, again, what we need. So you have to listen the class carefully. Okay, if you want to drop, I'm going to give 1 minute of time. Please, this is the time to drop your class. Not necessary if those students don't want to listen the class.
What I'm saying, did you get me? I think, what did I say? Did you get me? Those peoples want to listen from beginning to end, should be. Otherwise you can drop now itself. I don't have any problem, and we are not feeling anything sad also. Why? Because we will think you are not interested, that's it. First of all, Hindi, how should teach? What is the government rule? Hindi to Hindi should explain, that's it. That's why I'm trying my level best. If these also English or Telugu, if I will go, then what you will learn when you will learn a new language? So this is I want to tell this matter. So please, I hope you people are understand. Okay, don't think negatively. Okay, be positive. Okay, I hope more than nearly 300 people are listening. I once again I'm saying, if you want to drop anybody now, only it is the time to drop the class. Otherwise, till end you have to listen. Got it, everybody? If you will agree with me, please requestly thumbs up symbol. Soumya, I got it. Munishwar, I got it. Okay, Rishika, I have seen. Okay. Okay, thank you. Thank you. Maximum positive response. Okay. Okay, good. Okay, now it is time to start our class. So last class में मैं कहां तक पढ़ाया हूं, शायद एक बार बता सकते हो? ऋषिका, क्या आप बता सकती हो हमारा पाठ कहां तक हुआ है? अनम्यूट करो और मुझसे बात करो. डरने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ ऋषिका, हमारा क्लास कहां तक हुआ है? I am now only attend, sir. Okay. Okay, okay. Today only you have joined. Okay? Okay, no problem, not a problem. Anybody, can you tell? हमारा क्लास कहां तक हुआ है? ये पूरा मीनिंग्स मैं आपको दे चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट लिए हो. ओके? और शायद आप CW भी शुरुआत किए हो. मैं आशा करता हूं आराम से स्लोली आप अपना CW लिखना शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप स्लोली काम करेंगे तो आपको बोझ नहीं होएगा. इट वॉन्ट बी बर्डन टू यू. ओके, सो प्लीज जो भी काम है आराम से सोच समझ कर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए. ये पूरा मीनिंग्स मैं पाठ के अनुसार दे चुका हूं. ओके, आप सब लोग भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. ओके, ये कोटेशन भी हम लोग पढ़ चुके थे. जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा. ओके, फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सामने वाले व्यक्ति को हम लोग जो वस्तु देंगे वही वस्तु भगवान के द्वारा हम लोग का प्राप्त करेंगे. इफ यू आर द पीपल गोइंग टू चीट विथ अदर्स, देन वन डे you also going to cheat from yourself with others. Okay, so हम लोग दूसरे को धोखा देंगे तो हम खुद धोखा खा जाएंगे. हम लोग यही क्लास में 8वीं कक्षा में एक पाठ है जो तुलसी काया खेत है मनसा वयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुवई सोलुनाई निदान. म्हणजे क्या कवि का उद्देश्य क्या है? यहाँ तुलसीदास जी के उद्देश्य क्या है? शरीर एक खेत के समान है. बॉडी इज इक्वल टू फील्ड, our heart is equal to like a farmer. Okay, so what is the concept here? This farmer, which type of seed he will keep, he will put in that land, or he will feed in that land, that type of crop we will get. हम लोग किसान भाई के द्वारा जो प्रकार के फसल like चावल like that mean rice, wheat, or maize, whatever it may be. Okay, so कौन सी प्रकार के क्रॉप, कौन सी प्रकार के फसल, कौन से प्रकार के बीज हम लोग बोएंगे तो उसी तरह के फसल हम लोग प्राप्त करेंगे. शायद आपको दान के चावल के दाने आप लगाए आपके खेती में तो आप चावल के फसल को प्राप्त करेंगे. सेम उसी तरह आपके दिल और दिमाग में बुरे ख्याल रखे हैं तो बुरा फसल प्राप्त करेंगे. आप प्यार की भावना है, प्यार के सीड आपके दिल में रखे हैं तो प्यार का संबंधित फसल ही आप लोग प्राप्त करेंगे. आपके माता पिता के साथ आप धोखेबाजी की फसल आपके दिल में रख चुके हैं, एक बीज, इट इज वन ऑफ द सीड लाइक अ चीटिंग, देन यू विल गेट दैट टाइप ऑफ क्रॉप. सो आई होप यू पीपल्स आर अंडरस्टैंड.
सामने वाले के साथ हम लोग कैसा व्यवहार करेंगे उसी तरह भगवान भी हमारे साथ उसी तरह व्यवहार करेगा। इसलिए जीने वाले ये 4 दिन ईमानदारी से जिएंगे, मरेंगे तो ईमानदारी से मरेंगे, सामने वाले व्यक्ति को कभी भी धोखा नहीं देंगे। इसलिए यहां कह रहा है जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा। व्हाट इज दट तेलुगु? ఏ వస్తువు అయితే మనం ఎదుటి వ్యక్తికి ఇస్తామో అదే మళ్ళీ తిరిగి మన దగ్గరకు వస్తుంది। చాహే वो इज्जत हो, అది ఒకవేళ గౌరవం కావచ్చు, సారీ రెస్పెక్ట్ కావచ్చు, సమ్మాన్ గౌరవం కావచ్చు, హో యా ఫిర్ ధోకా, ఒకవేళ అది మోసమే కావచ్చు। అంటే దాని అర్థం నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేస్తే భగవంతుడు నిన్ను కూడా మోసం చేస్తాడు, నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే దేవుడు నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తాడు। ఓకే, నీ హృదయం అనేటువంటి పొలంలో మనస్సు అనేటువంటి రైతు ద్వారా ప్రేమ అనేటువంటి విత్తనాన్ని నాటితే నీ యొక్క పొలంలో, నీ యొక్క శరీరం అనేటువంటి పొలంలో ప్రేమ అనేటువంటి పంట కోయగలుగుతావు। ఇది దాని అర్థం తెలుగులో। సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ in which way your thoughts are there, in that particular way only you will get that particular result. So please always think positively, don't go negative way. Okay, ये पूरा हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। ओके, सुधरना बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। सुधरना मीन going to like in the correct track in positive way, बिगड़ना means spoiling our career. This total depending on in human beings character or human beings work, on human beings work. That means in which way you are going to talk, in which way you are going to do something work, according to that you will get that particular result. I think I am right. Yes or no? In which way you will talk with others, from others, that way you will get a result. That means give respect and take respect. If you will talk politely to others, with others, then others also will talk with you politely. If you will talk with the others rashly, then the same result you will get. If you're not respecting others, even your parents, friends, teachers, neighbors, then you will get respect from them. No. So think, be positive. Each and everything it is depending on your way of talking. Each and everything it is depending on what work you are going to do. So इस तरह हम लोग पाठ पढ़ चुके थे। ये हमारे पहला पन्ना में राजेश एक बालक दिखाई दे रहा है। यस और नो? एक बालक दिखाई दे रहा है। ये बालक के हाथ में, ये बॉय के हाथ में, एक हाथ में ग्लोब है और एक हाथ में क्या है? पुस्तक है। और ये पुस्तक के ऊपर कुछ एक 2 वाक्य लिखा है, ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। ओके, विथ नॉलेज वी कैन चेंज एंटायर द वर्ल्ड। ओके, दैट मीन इफ यू आर द पर्सन हैव ए फुल्ली ऑफ नॉलेज, देन विथ योर नॉलेज यू कैन चेंज एंटायर द वर्ल्ड। अगर आपके पास अपार ज्ञान है, बुद्धि है, सोचने की क्षमता है, आप अच्छे काम कर सकते हैं, ईमानदारी के पाठ पढ़ सकते हैं, माता पिता को गौरव कर सकते हैं, अध्यापकों को गौरव कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ अच्छा सा व्यवहार कर सकते हैं, स्त्रियों को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, आपके क्लास में आपके हर एक गर्ल को बहन के रूप में, एक सिस्टर के रूप में देख सकते हैं, तो दुनिया या भगवान आपको भी भला कर सकता है। और आप जब भी मुसीबत में रहेंगे पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी। लेकिन आप ये पूरे जो माता पिता के साथ, अध्यापकों के साथ, दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, समाज के साथ अगर अन्याय करेंगे तो जब आप मुसीबत में रहेंगे, आपको देखने के लिए या आपको मुसीबत में निकालने के लिए कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जो पुस्तक के ऊपर लिखा है, ज्ञान से पूरी दुनिया बदल सकते हैं हम लोग। इफ यू हैव ए गुड नॉलेज, विथ दैट यू कैन चेंज एंटायर द वर्ल्ड, नॉट ओनली योर पर्टिकुलर एरिया, or not only your school, or not only your family, you can change entire the world. You can rule the country, you can rule the world. I think you all people need that. Am I right? हर एक व्यक्ति दुनिया को रूल करना चाहते हैं, दुनिया में एक अच्छा नाम कमाना चाहते हैं। Am I right? Your people want to get a good name in the world. Yes or no? At least a lip movement. Yes sir. You can't tell? Say anything, yes sir or no sir. Tell me yes sir. Yes. हर एक विद्यार्थी दुनिया में
एक अच्छा स्थान पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है और चाहता है वो दुनिया में एक उन्नति स्थान पर रहें, अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, इस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आपके पास, ये पुस्तक का अर्थ होता है आपके पास जो विद्या है, पढ़ाई है, अगर आपके हाथ में पढ़ाई है, एजुकेशन है, तो ये एजुकेशन के द्वारा ये पूरा दुनिया आप बदल सकते हैं। ये दुनिया में जो भी खुशियां हैं आप पा सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं वो समस्या को साकार कर सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं। दुनिया में एक नंबर 1 व्यक्ति की तरह जीने की अवकाश है, केवल किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ये ज्ञान कहां से मिलता है? अभ्यास के द्वारा, विद्या के द्वारा। विद्या बोले तो कोई लड़की का नाम नहीं, पढ़ाई, एजुकेशन। ओके, सो ये चित्र के द्वारा इस तरह के ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह का संदेश हमें मिल सकता है। ओके, अगला पार्ट में जाएंगे हम लोग। और ये पूरा पढ़ चुका था मैं, फिर एक बार मैं पाठ पढ़ता हूं, कृपा करके आप सब लोग सुनिए। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था, रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर, जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूं और ना ही फेंक सकता हूं, क्या करूं इसका? क्या हुआ? एक लड़का है, वो लड़का का नाम राजेश है। एक दिन वो बीच सड़क पर बीच सड़क जंगल पे चलते हुए जा रहा है। जंगल में एक रास्ते के ऊपर से चलते जा रहा है। उससे क्या मिला प्यारे बच्चों? एक सोने का सिक्का, सोने का सिक्का मिला। और वो सोचने लगा अपने आप में, ये सोने का सिक्का तो मेरा नहीं है, इट इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, मैं क्या करूं इसका? ना तो इसे मैं फेंक सकता हूं और ना ही इसे मैं अपने पास रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने पास रखूं तो ये मेरा वस्तु नहीं है। अगर मैं ये सोने के सिक्के को फेंकूं, कोई दूसरे अनजाने व्यक्ति लेगा, वो गलत इस्तेमाल करेगा। ओके, ही विल यूटिलाइज दैट गोल्डन कॉइन इन द रॉन्ग वे। ओके, गलत इस्तेमाल करेगा तो वो सही नहीं है। तो ये सोचने लगा राजेश, किस बेचारे का सिक्का यहां गिर गया है, अब मैं इसे क्या करूं करके ऐसे ही सोचते सोचते आगे चला जा रहा है। कौन? हमारा पाठ का हीरो राजेश। तो क्या हुआ? सामने से एक साधु महाराज माला जपते हुए आ रहा है, वही रास्ते पर। ओके, वही रास्ते पर माला जपते हुए एक साधु महाराज आ रहा है। तो राजेश ने तय में निश्चय किया, डिसाइड किया, क्यों ना ये सोने की सिक्का मैं राजेश को ही दे दूं। ये क्यों ना ये सोने के सिक्का मैं साधु महाराज को ही दे दूं करके राजेश अपने मन में सोचा। सोचते सोचते आगे गया, महाराज सामने से चलते आया, 2 हाथ लेकर महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज करके प्रणाम किया, शायद आशीर्वाद भी लिया होगा। महाराज उन्हें आशीर्वाद दिए, 100 साल जियो बेटा करके। तब ये राजेश पूरी कहानी बताना शुरू किया। महाराज, मैं ये जंगल के रास्ते से चलते अपने घर जा रहा था, तो बीच रास्ते पे रोड के ऊपर मुझे एक सोने का सिक्का मिला। वो सिक्का मेरा नहीं है, किस बेचारे का गिर गया मुझे नहीं मालूम है। मैं उसे फेंकना चाहता था, लेकिन ये किस बेचारे का है मुझे नहीं मालूम। अगर मैं ये अपना पास रखना चाहता हूं तो ये मेरा नहीं है, मैं क्या करूं ऐसे इसे करके महाराज को बताया। तो अंतिम में राजेश ने बताया, क्यों ये सिक्का कृपा करके मैं आपके पास ही लौटाना चाहता हूं, आप ही रख लीजिए करके महाराज को विनती किया, रिक्वेस्ट किया। तो महाराज ने क्या समाधान दिया? देखो, थर्ड प्यारा में राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा? बेटा, माय डियर सन, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। क्या बता रहा है? माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। साधु ये सोने के सिक्के को लेकर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। साधु महाराज का ड्यूटी क्या है, उनका कार्य क्या है? भगवान को पूजा करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान के चरणों में अपने जीवन को अर्पित करना, ये साधु महाराज की ड्यूटी है, उनका कार्य है। अगर वो सोने के सिक्का साधु महाराज लिया तो क्या बनेगा? स्वार्थी बनेगा। म्हणजे उनका सोच विचार सोना चांदी धन दौलत पर है, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं है करके उसका अर्थ बदलेगा। इसीलिए साधु महाराज ने क्या कहा? मेरे प्यारे बेटे, ये सोने के सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, तो क्या करूं इसे करके वापस राजेश ने पूछा। तब
साधु महाराज समाधान दिया, क्या दिया? इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। क्या बता रहा है? कोई गरीब इंसान मिलेगा, कोई बूढ़ी मां मिलेगी, कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा, तो ये सोने के सिक्के उनको लौटा दो। कम से कम ये सोने के सिक्के को वो मार्केट में बेचकर कुछ पैसे आएंगे, तो वो पैसे से वो 3 वक्त के भोजन तो खाएंगे, वो अपना पेट भर सकेगा, वो को थोड़ा जिंदगी गुजारेगा करके महाराज राजेश को सलाह दी। तो राजेश ने क्या किया? आज्ञा का पालन किया। महाराज जो आदेश दिया, जो संदेश दिया, वो संदेश का पालन किया। यस माय डियर लॉर्ड या महाराज सेंट। साधु की बात मानकर, देखो चौथे प्यारे में देखो, साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही थी। जी महाराज, जैसे आपने कहा वैसा ही करूंगा मैं करके साधु महाराज के पास से प्रणाम लेकर वापस आशीर्वाद लेकर वापस आगे चला जा रहा था। रास्ते में तो क्या हुआ, वैसे ही चला जा रहा तो सामने से एक बड़ा महाराज अपने सेना को लेकर वही रास्ते पे आ रहा था। तो राजेश को कुछ शक आया, डाउट हुआ, अरे इतने हमारे देश के महाराज इतनी बड़ी सेना को लेकर कहां जा रहा है, शायद कोई तो मैटर है, कोई तो विषय है, वो क्या है एक बार जानेंगे करके राजेश वो सेना में रहने वाले एक सैनिक के पास गया और वो सेना से पूछा। देखो उसने एक सैनिक से पूछा, सेकंड लास्ट लाइन, उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहां जा रहे हैं? माय डियर ब्रदर, आप सब लोग कहां जा रहे हैं? आप सब लोग कहां जा रहे हैं? इतनी बड़ी सेना लेकर हमारे महाराज कहां जा रहे हैं आपको लेकर करके बताया। तो वो सैनिक, वो सोल्जर समाधान दिया। क्या बता रहा है? ये हमारे राजा शूर सिंह हैं। वो सैनिक क्या समाधान दिया? ये हमारे महाराज शूर सिंह हैं, बड़ा महाराज है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग टू यू डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट किंग नेम? टेल मी। शूर सिंह, व्हाट इज द नेम? शूर सिंह। ओके ओके, शूर सिंह है। और उनके कार्य के बारे में, उनके काम के बारे में बता रहे हैं, वो क्या काम करते हैं। अभी इन लोग सब लोग मिलकर कहां जा रहे हैं? देखो, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने के लिए जा रहे हैं। क्या बता रहा है? जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर और उसे लूटने के लिए जा रहा है। पड़ोसी देश में नाइबर कंट्री, हमारे फॉर एग्जांपल आवर कंट्री इंडिया, हमारे आजू बाजू वाले के देश क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सॉरी बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे हमारे सरहद में रहने वाले कुछ देश हैं। और ये महाराज क्या कर रहे हैं? ये बाजू वाले पड़ोसी देश को लूटने के लिए जा रहा है। लूटना मीन लूटिंग, माने उनके देश को जाकर, उनके देश में जो भी सोना चांदी धन दौलत है, हाँ, उनको मार डाल के उनके पास जो धन दौलत है वो पूरा लूटना है। दंगलिंग चढ़ाने की, लूटने के लिए और आक्रमण करने के लिए। आक्रमण मीन अटैकिंग, उन देश पर अटैक कर वो देश में जो भी धन संपदा है वो पूरे लूटने के लिए वो देश पर जा रहा है। तो क्या हुआ देखो, लूटने जा रहे हैं करके वो बच्चा म्हणजे वो सैनिक राजेश को समाधान दिया। तो इमीडिएटली राजेश के दिल में एक सोच आया, वो एक विषय सोचा। क्या सोचा देखो, यहां से देखो मैं पढ़ता हूं। राजेश राजा के पास गया। राजेश क्या किया? With humbly he went to that king near. Okay, हृदय पूर्वक, अपने आप को कम महसूस करते हुए महाराज के पास गया। ये देखो, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेना है और ये महाराज है, घोड़े के ऊपर बैठा है, और ये हमारा राजेश है। और ये राजेश ने क्या किया? वो सेना, वो सैनिक ने बताया था हम पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहे करके समाधान देने के बाद राजेश ने एक निर्णय लिया और वो महाराजा के पास जाकर, ये देखो क्या कर रहा है, ये सोने के सिक्के महाराज को दे रहे हैं। वो कहानी क्या है देखो, राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ओर मीन द डायरेक्शन, ओके, उनकी ओर, ओके, उनकी ओर बढ़ाते हुए क्या कहा? लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए, प्लीज माय डियर किंग, ओके, जस्ट एक्सेप्ट माय गोल्डन कॉइन, जस्ट कीप इट विथ यू, टेक दिस गोल्डन कॉइन। आप कृपा करके
आप कृपा करके ये सोने के सिक्का आपके पास रखो करके ये सोने के सिक्के महाराज को इस तरह दे रहा है, जो हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, आप सबको दिखाई दे रहा है ये चित्र? यस, ये राजेश क्या कर रहा है? सोने के सिक्का राजा के ओर बढ़ाते हुए उनको दे रहा है। तब लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए, इस तरह का प्रश्न किया। तब राजा ने क्या किया देखो, बेटा, माय डियर सन, व्हाई यू आर गिविंग टू मी, मुझे क्यों देना चाहते हो? व्हाई यू आर गिविंग टू मी? द किंग सेइंग टू राजेश, व्हाई यू आर गिविंग टू मी? राजा ने आश्चर्य के साथ का पूछा, with excitedly he asked, shockingly asked, I'm not a poor, I'm not a beggar, I'm not a poor, I'm not a beggar, why you are giving to me that golden coin? I'm a king, hold this country. Yes sir, मैं ये पूरे देश का महाराजा हूं, मैं ये सोने के सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो करके शायद एक्साइट होकर ये राजा राजेश से कहा, राजेश को पूछा। तब राजेश समाधान दे रहा है ये प्यारा के अनुसार। देखो राजेश गिविंग रिप्लाई, प्लीज लिसन हियर केयरफुली एवरीबॉडी। महाराज देखो, महाराज, डियर किंग, माय लॉर्ड, एक साधु ने कहा था कि मीन इट इज नॉट अ कारक, हियर इट इज अ कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। In future, if we will get a time, I will explain very much clearly. Okay, this छोटी की, it is a conjunction. Okay, see क्या बता रहा है? एक साधु ने कहा था कि, don't tell like a, साधु ने कहा था कि, it is not a गुड़ी दीर्घम, it is a गुड़ी, it is a conjunction. Okay, क्या कहा था? एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। पहले से कहानी बता रहे हैं। Dear king, see, while I'm going to my house on road, I got a golden coin, and this golden coin, it is not mine. Then I want to throw, but I didn't throw. And I want to keep myself, but it is not mine. That's why I didn't keep myself. That's why, while again I'm going, then in front of me, a saint, one Sadhu Maharaj, a saint came in front of me, and with the humbly, with the respectively, requestedly, I have given to him, but that Sadhu Maharaj, that king, that saint didn't take this golden coin, and he told me a sentence. He told me, suggested me, if my dear child, if you will get any poor person, please hand over to him. With that golden coin, he will fulfill his stomach. That means he won't eat a golden coin directly. Okay, with that money, he will eat some food like that. That saint told me, suggested me. क्या हुआ? एक महाराज को मैं देना चाहता था, लेकिन वो महाराज मुझे सलाह दिया, मुझे बताया, अगर बेटा आपको कोई गरीब व्यक्ति मिले तो ये सोने का सिक्का उसको दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके करके साधु महाराज ने बताया। ओके महाराज करके मैं उनके आज्ञा का पालन करते हुए, उनके पास आशीर्वाद लेते हुए यही रास्ते से मैं आगे चला जा रहा, तो आप दिखे मुझे, आप इतनी बड़ी सेना को लेकर कोई दूसरे देश को जा रहे हैं। मैं सैनिक से पूछा, एक सैनिक भाई से पूछा, I have to ask what that? I asked to a soldier. Then he replied me, he is our king. His name Shor Singh, and we are people going to neighbor country to attack and looting that wealth. Why we are going to another country? To attack him. हम लोग दूसरे देश पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसे आक्रमण करके वो देश पे जो सोना चांदी है उसको लूटने के लिए। వేరే దేశానికి మేము దాన్ని ఆక్రమించి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి సిరి సంపదలను దోచుకోవడానికి వెళ్తున్నామని అన్నయ్యను సైనికుడిని అడిగితే అతను చెప్పాడు అని మన రాజేష్ ఈ జరిగినటువంటి కథ మొత్తం మహారాజుకు తెలియజేస్తున్నాడు. What up to now it was happened, that everything it has happened, that everything he is explaining to that king. Then he realized himself. What is that king has realized? Then what does that mean? That a beggar person none other than our king only, no? The meaning, that's why he's saying, see, once again I'm reading. Maharaj, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे, गरीब mean poor person, if you will get any very poor person, please hand over to this golden coin to him. उसे यह सिक्का दे देना. राजेश करुण स्वर में बोला. करुण mean with the very politely, very humbly, respectively, he replied that answer. Then immediately that king got very angry. महाराज को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया.
क्या बताया? मैं राजा हूं राजा, तुझे गरीब लगता हूं? राजा क्रोध में बोला, what you're thinking about myself? I'm a king. You're thinking I'm a beggar. I'm not a beggar. How dare you giving me this golden coin? Then Maharaj, then Rajesh giving to reply to the king, Maharaj, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेके क्यों जाते? क्या बता रहा है? ये देखो, महाराज यदि आप अमीर होते तो, ओके डियर किंग, इफ रियली यू आर द रिच पर्सन, why you are going to that another neighbor country to attacking on looting? अगर सच में आप अमीर हैं तो आप ये दूसरे देश को आक्रमण करके वो देश की सिरी संपदा जो भी धन दौलत है, हाँ, वो पूरा लूटने के लिए क्यों जा रहे करके राजेश महाराजा को पूछा। तो महाराज पश्चाताप पड़ गया, उनके गलती का महसूस किया, उन्हें समझ में आया वो कितना बड़ी गलती करने जा रहा है। तुरंत अपने आप में बदलापन आकर एक छोटे से बच्चे के कहने से ये महाराज पूरा बदल गया। वही कहानी है राजा बदल गया, हमारा पाठ का नाम। तो आगे बढ़ेंगे। तो राजेश की बात राजा की समझ में आ गई, राजेश की बात राजा की समझ में आ गई और उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती मीन मिस्टेक्स, एहसास मीन रियलाइजिंग और अनदर वर्ड फीलिंग्स। ही रियलाइज्ड विद हिज मिस्टेक्स। क्या हुआ? वो अपना गलती का एहसास किया। यस, व्हाट दैट बॉय हैव टोल्ड दैट एवरीथिंग इट इज करेक्ट। वो राजेश क्या बताया था वो पूरा सही है, वो पूरा सही है। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। And the king has appreciated to that Rajesh. Yes, very good my child. राजेश, मैं अभिनंदन करता हूं तुम्हारा, तुम मुझ जैसे महाराजा को ही बदला दिया, तो आप अच्छे अच्छे काम करने की क्षमता आप में है। जो मैं गलती करने जा रहा था वो पूरे मेरे आंखों के सामने मुझे दिखाया। वेरी गुड राजेश करके उसे अभिनंदन किया, अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करके अपने सेना को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? पीछे मुड़, वापस अपने देश को लौटे। हम लोग कोई दूसरे देश को नहीं लूटेंगे, कोई दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, वो गलत है करके वो अपने गलती का महसूस किया। तब राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उन लोग का वापस चले गए। They went to return back their own country. Then उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। उस दिन से क्या हुआ? That particular day he has decided, the king has decided to help to poor peoples. उस दिन से महाराज पूरा निर्णय लिया, अपना पूरा गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया। और हमारे देश में जो भी गरीब हैं, जो भी बूढ़ी माँ हैं, जो भी अनपढ़ हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान भाई हैं, जो लेबर कूली हैं, उन सबको मदद करने का निर्णय लिया महाराज। केवल एक बच्चा का एक अच्छा संदेश के द्वारा ये राजेश ने, एक छोटा बालक राजेश ने इतनी बड़ी महाराज को, इतना बड़ा सेना को बदला दिया। और वो एक वाक्य के द्वारा उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति टोटल वेल्थ ट्रेजरी, ओके, संपत्ति जनता की सेवा में, जनता की भलाई के लिए, प्रजाओं की भलाई के लिए खर्च करना आरंभ किया। म्हणजे जिसके पास घर नहीं है उनको घर बना के दिया, जो बूढ़ी माँ है उनको जो जरूरत है उनको वो करके दिया, जो किसान भाई को खेती चाहिए, कुछ मोटर चाहिए, कुछ पाइप्स चाहिए, कुछ बैंकों से लोन चाहिए, वो पूरा कर दिया, उनको मदद किया। जो लंगड़े हैं उनको चलने के लिए कुछ हैंड स्टिक्स, ओके, कुछ साइकिल, जो 3 पहिए का साइकिल रहता है उस तरह का मदद किया। जो अंधे हैं उनको ऑपरेशन करवाया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई दिया, बड़े बड़े स्कूल बनवाए। इस तरह आप अपना राज्य को बड़ा अभिवृद्धि के प्रगति पथ में चलना आरंभ करवा दिया।
केवल राजेश के द्वारा ही उसमें वो व्यक्ति में, वो बड़े राजा के व्यक्ति में परिवर्तन आया। अब एक बार सोचो, वो राजा के स्थान पर अगर आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे? स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए, लालच की भावनाओं में जाकर वो सोने के सिक्का अपने जेब में डालकर घर जाएंगे? या आप भी राजेश की तरह सोचेंगे ये मेरा नहीं है, कोई बेचारे गरीब का गिरा हुआ सोने का सिक्का ये हमारा नहीं है, कोई गरीब को मिलेगा तो गरीब मिलेंगे तो उनको ही दे दूंगा करके निर्णय लेंगे, या गरीब की सेवा में बांटेंगे? क्या करेंगे आप अगर राजेश के स्थान पर रहेंगे? तो मुंह से हजारों शब्द कहते हैं, नहीं सर आपने जो कहा वो सही है, अगर मैं राजेश के स्थान पर रहूंगा तो सच में जो राजेश ने क्या किया उसी तरह करूंगा। लेकिन 100 में out of 199 peoples will do wrong thing, there is only one person, केवल एक व्यक्ति ही अपने परिवर्तन में बदलाव ला सकता है और वो व्यक्ति आप बने। मैं कृपा करता हूं कभी भी कितनी मुसीबत हो गलत रास्ते में नहीं जाना। कोई दूसरे के वस्तु मुफ्त में मिलेंगे तो अपने हम लोग नहीं लेना, वो सही नहीं है। अगर आप सामने वाले को धोखा देंगे तो एक दिन आप स्वयं खुद धोखा खा जाएंगे। मैं आशा करता हूं हम लोग कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करेंगे, राजेश की तरह ईमानदारी की जिंदगी गुजारेंगे। अगर कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं महाराज की तरह तो उनके गलत रास्ते को सही रास्ते में बदलेंगे, उनको एक अच्छा सा मार्ग दिखाएंगे, शांति के राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। शायद ये हमारे पाठ थी, राजा बदल गया। अब आप सबको समझ में आया होगा राजा कैसे बदल गया। I hope you people are understand. Did you understand everybody how the king was changed? If you understand, please one thumbs up symbol. Already Venki CH, thank you. Nandini, Jhansi, Venki. Okay, मैं इससे आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मुनीश्वर, जोया, तमक, कानत, ओके ओके ओके, वंशी, ओके, थैंक यू वेरी मच। और इससे मैं जो गुस्से में शायद कह चुका था, हाँ जोया 2 मिनट समय है हमारे पास, अभी बाय बाय मत कहो। ओके ओके, सो इससे पहले मैं जो गुस्से में कहा था, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियां जो क्लास सुनते समय ड्रॉप आउट हो रहा है, ये सही नहीं है। ओके, बिगिनिंग से लेकर एंड तक पार्ट सुनेंगे। जो हर एक टीचर, वो हिंदी हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, जो भी हो, आपके लिए हम लोग कष्ट कर रहे हैं, आपके लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। इसलिए हर एक क्लास आप अंतिम तक सुने। कम से कम 1% ज्ञान बढ़ेगा तो भी काफी है ना। मोबाइल में अनेक प्रकार के जो जरूरत नहीं है हम लोग खेलते हैं, उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय हर दिन में कम से कम 1.5 घंटा हमारे भविष्य के लिए नहीं सोच सकते हैं, हमारे भविष्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार सोचो, जो आज मैं कहा हूं, हर एक टीचर के, हर एक उपाध्याय, अध्यापक के दिल में यही राज है, यही भावना है। आप ड्रॉप आउट होते हैं, उसका अर्थ क्या है हमें समझ में नहीं आता है। हम लोग सोचते हैं अरे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चलेगा। आप डायरेक्ट ड्रॉप आउट होंगे तो उसका अर्थ क्या है, आपको भूख लग रही है, या आप कोई वॉशरूम पे जा रहे हो, या आप बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ, हमें कैसा पता चलेगा। ये सही नहीं है विद्यार्थियां। आप हर एक अध्यापक के दिल के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग खुशी खुशी दिल से आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, हमारे पाठ को आप थोड़ा तो गौरव करें, थोड़ा तो रेस्पेक्ट करें। हम किन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, केवल आपके लिए ना। हमें क्या जरूरत है, आपकी तरह हम लोग भी घर पे रेस्ट ले सकते हैं ना। थोड़ा समझो, जो भी सब्जेक्ट हो, बिगिनिंग से एंड तक आप क्लास सुनने के लिए प्रयत्न करें। और आपके जो भी दोस्ती हैं, जो भी सहेलियां हैं, जो भी मित्र हैं, उनको सुझाव दें, सलाह दें। जो टीचरों के द्वारा जो मोरालिटी, जो नैतिक वैल्यू, जो मोरल वैल्यूज हमें प्राप्त कर रहा है, जो माता पिता के महत्व के बारे में हम लोग सुन रहे, दोस्त के महत्व के बारे में सुन रहे, समाज के महत्व के बारे में सुन रहे, ये पूरा अच्छा ही है, कोई भी बुरा नहीं हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको।
कोई भी एक अंश बुरा पढ़ा रहे हैं? नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत रास्ते में जा रहे हैं, हमारे महाराज की तरह उनको सलाह दीजिए, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। हम लोग पाठ सुनेंगे, ओके, हम लोग लेसन सुनेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं हमारे साथ, चैट बॉक्स में लिखो, हम लोग पढ़ेंगे। आपके करस्पॉन्डेंट, आपके अध्यापक को बताओ, हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आपका जो भी समस्या है, हम तैयार हैं आपके हर एक समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन आप पूरे अंतिम तक, अप टू एंड क्लास सुनने के लिए प्रयत्न करेंगे। और ये सही नहीं है कि पलंग पर सोना, लेटना, घूमना। क्लास सुनते समय हम लोग क्लास में कैसे बैठेंगे, उसी तरह बैठकर सुनना गौरव है। अध्यापक भगवान के समान है करके बताते हैं समाज, और वो अध्यापक के पास आप लोग आ रहे, कैसे बिहेव करना? मंदिर में जाएंगे तो ऐसे ही पूजा करेंगे हम लोग? नहीं। थोड़ा तो हृदय में गौरव रहना अध्यापक के वास्ते। अच्छे से एक जगह बैठो, एक जगह पे बैठो और अच्छे से क्लास सुनो, वो सही है। कॉन्फिडेंट हमें हिम्मत दिलाती है, भरोसा दिलाती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हमारी खुद की जिंदगी को तबाह करती है, सत्यानाश करती है। तो कोई भी विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना। जो मैं कह रहा हूं आपके भलाई के लिए ही कह रहा हूं। देखो, आज भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप आउट हुए, उसका अर्थ मुझे नहीं मालूम, यह सही नहीं है। फिर एक बार मैं बता रहा हूं। ओके, आई होप यू पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेसन। ओके, नमस्कार।